गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कल इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर चार्ज और पोटेंशियल जीरो होता है या वर्क डन उस सरफेस पर किया गया कुल वर्क डन जीरो के बराबर। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जैसे कि नॉट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, no work should be done on equipotent surface. Now आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम्स. So first system is point charge. Here point charge Q. Now what are the electric field lines in this case? Normally or radially outward. Now V equal to K Q upon R. ये हमने कल भी डिस्कस किया था. अगर R कांस्टेंट है पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा. So in this case the equipotential surface look like this. We show by black marker. So in this case it is spherically symmetric and what is the nature? Concentric circles. Concentric circles. Now second one, टू आइडेंटिकल चार्ज. अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ होती हैं. This one. Now how equipotential surface arises? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या बाहर की तरफ को जा रही हैं, इसीलिए जो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन स्टार्ट होगा. रिपल्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, दोनों पीछे की तरफ को जाएंगे. अगर पीछे की तरफ को जाएंगे जो पीछे वाले सर्कल्स हैं उनमें जो डिस्टेंस है बीच की वो क्या होती जाएगी, कम, जबकि आगे जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज. सो इसीलिए इस तरह की इसकी शेप आई. अगेन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इसी तरह का क्यों बना. अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें तो सिंगल चार्ज में इस तरह का बनेगा. बट अगर उसके पास कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो क्या होगा, रिपल्शन स्टार्ट होगा. रिपल्शन होगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ खिसकेंगे. अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल्स पहले बन रहे थे सेम डिस्टेंस पर, अब क्या होगा, जो पीछे जा रहे हैं उनमें डिस्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि वो रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को. तो क्या होगा, जो आगे वाले सर्कल्स हैं उनमें डिस्टेंस कंटिन्यूअसली क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज. सो टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आइडेंटिकल चार्ज इस तरह बनेगा. नाउ फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड look like this. So equipotential surface look like this. Fourth one case, two opposite charges in the same manner, they are electric field lines. So now what is the condition of equipotential surface in this case? They are close to each other. If both are close to each other or attract to each other, then here if they are comes together, so this space gradually decreases. So here, but that space continuously increase. So these are equipotential surface in case of different system of charges as is shown. Now we have discussed a new term. What is electric potential energy? और एक चीज इसमें और, what is the importance of equipotential surface? So equipotential surface like lines of forces or electric field lines, equipotential surface gives a visual picture of both direction and magnitude of the field. Remember that, like electric field lines or line of forces, equipotential surface give you a picture of both direction of electric field and magnitude of electric field. So now what is electric potential energy? What is electric
potential energy. Electric potential energy. So what is that? Now, first of all, what is potential energy? Potential means the energy due to static condition or rest. And suppose an object placed at a certain height from the surface, then it should have some potential energy. Now, what is electric potential energy? So here the energy arises due to charge from assembling the or bringing the charge from infinity. So it is defined as the total amount of work done, the total amount of work done in bringing the or in assembling the charges. Assembling the charges, the total amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them from infinity, मीन्स उनकी लोकेशन के कारण उनको असेंबलिंग करने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है वही किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के. नाउ फॉर टू पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 point charges. सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, here q1 and at certain distance here q2. There are two charges apart at any distance, suppose r12, here a point A, this is B. Now in our question or in our definition, the charge bringing them from infinity, so let us say a charge q2 brings from infinity to point B. Suppose, or let us consider a point charge q1, a point charge q1 is at rest at A in space. It takes no work done. So work done due to q1. Why there is no work done? Because it is at rest, so it does not place or it does not any displacement, so displacement is 0. So what is total work done? 0.
So W1 will be equal to 0. Now, but Q2 brings from infinity, so it should somewhere now. Electric potential due to Q1 at a point P2. इसके कारण इस पर कुछ जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा एट P2 फ्रॉम P1 और फ्रॉम B to A. V1 बराबर 1/4πε0 into Q1 और Q2. So it is from Q1, so it is Q1 upon R12. Equation number 1. So net work done on Q1 is 0, but potential at point this due to this is this. Now if the charge Q2 moves from इंफिनिटी, चार्ज कहां से मूव कर रहा है इंफिनिटी से. सो नेट वर्क डन इज वर्क डन रिक्वायर्ड हाउ मच. व्हाट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन थ्रू पोटेंशियल V बराबर W अपॉन Q. सो V बराबर W अपॉन Q. सो W बराबर V इंटू Q. W equal to V into Q. Q is what and V is what? V1. Electric potential due to Q1 at point B means इस पर जो पोटेंशियल होगा इसके कारण वो कितना है इतना. तो इसका मतलब जो ये पोटेंशियल ये इसके कारण है. So here consider V1. So VW2 equal to what? V1 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12. Net work done W equal to W1 plus W2. So W equal to Q1 Q2 upon R12. But the work done stored in the form of potential energy, so U equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12. Yes, this is the total amount of work done. Remember that there is no external field. अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आएगा तो दिस फॉर्मूला विल बी मॉडिफाइड. उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, not at the time. Now this is for two system of charges. Now what is the potential energy for three system of charges? See, now we not consider derivation but by using tricks. For 3 point charges,
suppose that this one q1 q2 q3 r12 r23 r31. So what is potential energy for the system? U equal to 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant quantity, so it comes out outside. Now for this one, suppose that ये क्यू आर थ्री वन मान लेना हमारे पास नहीं है, तो केवल ये दो बचे और इन दोनों के लिए हमने निकाला दो पॉइंट चार्ज के लिए Q1 Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस, सो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस नाउ फॉर दीज टू Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस now for these two Q3 Q1 upon R31. This is the answer. Now for fourth system of point charges, for 4 point charges, suppose this is Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R2 R3 R4. Now U equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R1 plus Q2 Q3 upon R2 Q3 Q4 upon R3 Q4 Q1 upon R4. कुछ और भी रह गया? बिल्कुल, there are two diagonals. This one, suppose it is R5, so Q2 Q4 upon R5 plus Q1 Q3 upon R6. So this is total potential energy for this system, for three systems. टू सिस्टम का हम पूरा डेरिवेशन कर चुके, इसके लिए भी कर सकते हैं, इसको एक पॉइंट मान करके वर्क डन ड्यू टू दिस इज 0, ड्यू टू दिस वन is due to both of them and is due to this work done 3, so all of them are added, so w1 plus w2 plus w3, w1 is 0, this one is 0, so there are three terms arises. Now in general for n point charges, for n point charges कितना होगा? U equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, again a constant quantity, it is summation for all. Here there are two terms 1 and 2, 2 and 3, so we take here, let us say ij equal to कहां से कहां तक, अप टू n तक, for all pairs, for all pairs qi qj upon rij. Here if I equal to 1, then j does not equal to 1, j equal to 2. So this is basic, or if we divide it for this in two different terms, for two different summations, for I and for j, so half should be multiplied. That means u equal to half of 1 upon 4 pi epsilon naught summation I qi upon r summation j qj upon r ij. I equal to 1 और इसको
कंबाइन ले सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिखने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। समीशन j इक्वल टू 1 क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जी, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम 1 to n because there are n systems. So this is all about electric potential energy definition for 2 point charges, 3 point charges, 4 point charges. जनरली इनके बेस पर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है और कोई डेफिनेशन वगैरह, ये डेफिनेशन वगैरह पूछ जाती है. बट नाउ व्हाट हैपन इफ the system of 2 point charge is placed in an external field? So can in that case work done due to q1 is 0 or not against electric field? Now see what changes when external electric field is applied. Potential energy in an external electric field potential energy in an external electric field for two system of charge के लिए कर लेते हैं. for system of two point charges. Now let us suppose V1 and V2 be the electric potentials that V1 and V2 be the electric potentials of electric field E at position vectors R1 and R2. means R1 पोजीशन पर पोटेंशियल V1 होगा, R2 पोजीशन पर पोटेंशियल V2 होगा. So work done in bringing Q1 कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू R1. बट जो हमने इससे पहले केस डिस्कस किया था उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि वो रेस्ट में था. बट हियर ऑन द डिस्प्लेसमेंट, सो ड्यू टू Q1 some work should be done. And what is that? R1 against electric field, Q into V, यानी Q1 into V1 R1. So this work should be done due to charge Q2. Let us say here there are 2 point charges Q1 and Q2. This brings infinity to R1 and this
also brings from infinity to R2. There is elsewhere a source of electric field. Now, what is work done due to Q2? Work done in bringing Q2 from infinity. W2 equal to Q into V2. So here both work done should be isolated to each other, but due to interaction of these charges, a work done is also occur. Work done on Q2. Now इस ये Q2 या ये Q1, ये Q2 इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण कुछ वर्क होगा, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन Q1 will be equal to, so what is 1 upon, या अभी ऑलरेडी सिंपल कैलकुलेट कर चुके, Q1 Q2 upon, let us say the distance between these two is R12. So net work done W equal to, so W equal to, or work done stored in the form of potential energy. So U बराबर V1 R1 plus V2 R2 plus, now here there is a minus sign. Why? Because of both of them are attracted to each other. If both of them are attracted to each other, so here we will take negative sign, but if we take magnitude of this, so we can consider here positive sign. But you should very well, due to this interaction of charges, attraction of charges, here we should take negative sign. So 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. तो हम क्या देखते हैं, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो these two terms occurs, these two. So it is all about potential energy. Hope so you understand it. Now in the next class, how much potential energy is arises or act when a torque or when a dipole rotates in a uniform electric field. But for today we are stopping here. Hope so you enjoy these classes and stay safe at home. Thank you.